Kashmir, as we all know, has been a land of great mystics, philosophers, and revered religious personalities since times immemorial. As a result, this place has been a seat of great learning and scholarship, confluence of ideas, sharing of knowledge, and promotion of the philosophical thought for scholars from all across the Indian subcontinent. Some of the great mystics and philosophers are reported to have come to Kashmir from time to time in search of the spiritual knowledge and scriptures, and then further contribute to spreading this spiritual and philosophical thought to other parts of the world. In the backdrop of this, I think today's seminar assumes great significance, especially for our young students. First, it's a great opportunity for them to not only learn about the teachings, works, struggles, and experiences of these great mystics and revered personalities, but also to capture the true essence and message in their teachings and works. This is one of the important ways for our youth, especially our young students, to broaden their understandings of the world and develop a greatly humanistic outlook about their day-to-day lives. These teachings, I am sure, will help them all to transform their lives into more balanced human beings, possessing the cherished values of humanism, compassion, and empathy for each other. Secondly, these teachings could also be a great source of inspiration for our youth to contribute to addressing some of the pressing social and environmental challenges of the time with pragmatic solutions. For example, it's in these teachings that we find the concept of sustainability, living by way of protecting our nature, natural resources on planet Earth. While on the one hand we have the great philosophy of Vedas on harmonious livings, on the other we find the teachings of Sheikhul Alam or Nund Rishi, wherein he says, Anposhitele Yelvan Poshe, to highlight the importance of conserving forests for a sustainable future. Another important aspect of this theme, I think, has to be seen from the perspective of the new National Education Policy 2020, which adequately highlights the contributions of great Indian scholars and philosophers who have had a very strong influence on the world's academic and scholarly landscape. I think how we incorporate these contributions in our curriculum will go a long way in serving the purpose of education offered in universities, which is to transform our young generation of learners into human beings having great intellectual capacities and a passion to serve the society, especially those from underprivileged sections. The role of academics in this endeavor is huge and challenging, but nevertheless impossible to achieve. I may also add here that our own university Tarana, written by late Professor Rahman Rahi Sahib, is an embodiment of this philosophical thought, talking about the scholarly land of Kashmir. Few verses of the University Tarana which sum up this thought are here. I quote, O Mother Kashmir, this is the land that harbors Shamindra's poignant tale and treasures of Bilhana's fond memories. Isn't it here that Kalhana's Vitasta sprawls far and wide and Abhinav Gupta's ocean of knowledge surges high? You are the refulgent frame of Lala's verse. You are the solemnity of Sheikh's sacred hymns. O Mother Kashmir, on this campus dawns the benediction of Hazrat Bal. Unquote. एक तरीका मेरे लिए बड़ा आसान ये हो सकता था कि मैं जो मुख्तलिफ फ़लसफ़े कश्मीर में जिनका वो जो मतलब जिनकी तरक्की हुई या यहाँ ही वजूद में आए
उनका कुछ वक्त में तयन करूं, बड़े बड़े फिलोसफर्स की बात करूं और या ये कहूं कि किसने क्या किया, ये बड़ा आसान तरीका है। और आप भी खुश होते, मैं भी खुश होता। लेकिन ये बात शायद अगर गूगल पर जाएं, किसी भी किताब में जाएं, ये बातें मिलेंगी। अब जितने जूनियर हमारे स्कॉलर हैं, कुछ सवालात मुझे जहन में आए हैं कि व्हाई इट हैपेंड, कि कश्मीर को क्या अजमत है। अभी मैं सोच रहा था ना कि रह के मैं सोच रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ। अब मुझे एक क्यों मुझे मिला कम से कम यहाँ। मैं मैडम तबस्सुम से बात कर रहा था, उन्होंने पूछा, अभी आपने देखा होगा कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई फील्ड। मैंने कहा आपका फील्ड क्या है? इन्होंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस। जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो कश्मीर से आगे कोई नहीं जाएगा। कैसे? अब आप कहेंगे कैसे? मुझे कम से कम ये नुक्ता मिल गया। ये जो बड़े बड़ी तहजीबें थी, जो नॉन तहजीबें हैं हमारे एरिया में, चाइना, ये तो जानते हैं, मेसोपोटामिया, बड़ी तहजीब थी। उधर से ईरान और हम लेंगे मिस्र। यहाँ से नीचे से जाएं हम, जिसे हम साउथ कहें, वादी सिंध, बहुत बड़ी तहजीबें थी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अब हमारा एज एक रहा। सेंट्रल एशियन स्टडीज ने सिल्क रूट पर कई सेमिनार किए। जब भी उस जमाने में यही आदान प्रदान की जो बात करते हैं, इन लोगों को आपस में सफर करना था, ये थ्रू कश्मीर होता था। मान लो चीन के किसी स्कॉलर को, ट्रेडर को सिंध आना है तो ज़ाहिर है कश्मीर से आना है। इसी तरह यहाँ से किसी को जाना है, मेसोपोटामिया से जाना है। ये अच्छा, कश्मीर का मौसम इसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। जो यहाँ विंटर बहुत देर रहता है, इसने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है हमारी फिलॉसफी में, हमारी साइंस में, हमारे जितने भी शोबे हैं। इनको क्या होता था, ये जब आते थे तो कश्मीर में एक स्टॉप ये था, 5 दिन 6 दिन रुकना है, मौसम, पहाड़, ये मजबूरी थी। नतीजा ये हुआ कि चाइना में जो कुछ हुआ, सिंध में जो कुछ हुआ, बाकी एरियाज में जो कुछ हुआ, उनका यहाँ आपस में मेल जोल रहा और हमारी फिलॉसफी निखर के आ गई। अब एक सिंध में क्या हुआ कि जब आर्या लोग आए, आर्या लोगों ने वहां के लोगों को खदेड़ा। They were compelled to move from that land. वो चल गए साउथ में चल गए। साउथ में चलकर अपना सब कुछ पीछे छोड़कर, आफ्टर सम टाइम इन्होंने कश्मीर का भी रुख किया। वहां सिंध में उन्होंने छोड़ दी, वो गए द्रविडियन एरियाज में। अपनी औरतें मान लो कुछ रह गई वहां। कश्मीर पर उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। जब कश्मीर आ गए, कश्मीरियों को कहीं जाने का मौका नहीं था, क्योंकि वहां से जाते तो उनको भी पता नहीं क्या मुसीबतें आती। लेकिन इस दौरान वो सिंध में बहुत कुछ सीख चुके थे। ये मैं कहता हूँ कि जो मुझे सवालात जहन में आए हैं, या आपको किताबों में अभी कभी कहीं नहीं मिलेंगे, इन पर गौर कर लीजिए। यहाँ जब आए तो ये सिलसिला, ये जो वही मैं कह रहा, फिर वही लफ्ज़ वही आएगा, जो एसिमिलेशन हुई तो उसकी वजह से, और आर्या भी थोड़ा सीख समझ कर आए थे बाद में, क्योंकि उन्हें तरबियत मिली थी सिंध में। अब कश्मीर पर पहले आ जाऊं, फिर ये इंटरनेशनल मामलात के हवाले से, और हमारा इससे जो चीन वगैरह से रब्ता रहा, ये तो किताबों में आप सब जानते हैं, चीन से कहाँ को कितने आए, इराक से कितने आए, कब, मुख्तलिफ दौर, बहुत कदीम, इवन यूनान से। यूनान का जिक्र तो अक्सर हमारी किताबों में मिलता है।
हेरोडोट्स, दे टॉक अबाउट इट, टॉलमी, दे टॉक अबाउट इट, नाम भी बदलते रहे। एक और आपको सवाल आज आपके जहन, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा, पहुंचा हूं लेकिन आपके जहन में। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर और इसकी बिगनिंग की बात करते हैं, वी स्टार्ट विद कश्यप ऋषि। कभी आपने ये सोचा है कि जब कश्यप ऋषि ने जंग की किसके साथ? जलोदबाव के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जलोदबाव पहला यहां का रहने वाला था, कश्यप दूसरा है, ही इज इन्वेडर इन ऑल सेंसेस। और जलोदबाव को किसने पाला? नागाज ने। तो नील नागा गया कश्यप के पास। जैसे जो मैंने कहा ना कि ये बड़ा मामला ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन पैदा हो गए हैं कि नील जाता है कश्यप के पास और कश्यप कहता है कि जलोदबाव ने हमें तंग किया। जरा इस पर सोचना है जरूरी। क्यों ना हम नील से शुरू करते हैं अपनी कहानी, जलोदबाव से शुरू करते हैं। कि एक चीज़ है, ये जो जितने भी उस्तूर हैं इनको इंटरप्रेट करना बहुत ही मामला है, बड़ा मुश्किल है। या तो हमें ये इंसान मानने हैं या देवता ही मानने हैं। बहरहाल हम अक्सर देवमाला के मुतालिक, अस्तूर के मुतालिक ये कहते हैं कि इंसान ही रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कश्यप इंसान था तो जलोदबाव ही इंसान था, तो नील भी इंसान। नील मत पुराण जो है हमारा जो पहला फलसफा है, तो नील मता में भी है। जब पिशाच आते हैं तो नील नाग, वो कहानी लंबी है कि वो कैसे यहाँ रहा था वो बूढ़ा पिशाचों में से, फिर उसे बोलता है कि ये चीज़ें आप करते रहो और आप यहाँ सुखी कश्मीर में रह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर का विंटर बड़ा हॉरिश पुराने ज़माने में ज़्यादा था। क्वेश्चन मेरा यही है कि कश्यप को ही क्यों मानी, नंबर 1। इस बारे में अभी हमने, क्योंकि एक बार एक नैरेटिव हमें सेट कर दिया गया है कि भाई ये है, ये है, ये है, तो यही चलता रहा। To understand the spirit of Kashmir Shaiva Darshana, we need to shun the preconceived notion of seeking a belief system, defined ritualistic commandments, or definite set of traditions. Trika is a dynamic and live tradition, and to know about it, just understanding of words is not enough. One needs an insight enough to hold all the paradoxes in the mind and heart at the same time, and also be able to zero them all so that he or she can get a glimpse of the ultimate reality. The valley is a place of deep secret buried hidden under its every appearance. That's a word which broadly or loosely covers the depths of dynamic explorations into the mysteries of life or the mystery of the universal dynamism. I have a special point to make here. The suffix ism used with Shaiva Darshana, as we call it Shaivism, may wrongly denote a set of beliefs to be followed or a set of rituals to be adapted to land in some fanatical delusion or hallucination. The intention of the suffix ism applied to anything that was not in line with the Western approach or Western way of things, where the whole search of exploring the mystery had a final goal of finding some aphorisms and commandments, is not just confined to Kashmir only. It's the basic approach of Western thinkers to put everything in their centering and in their prototypes or molds. They called Trika philosophy Kashmir Shaivism. Western writers and scholars have always remained confined to their defined structures and been somewhat uncomfortable with the ideas and explorations which challenge the set norms of their academic parameters. Their discomfort to open-ended views and philosophies of East has led to many confusions and misinterpretations in this process of great exploration.
To understand what we are compelled to call Kashmir Shaivism, one needs to get rid of the preconceived notions of seeking a belief system, definite set of traditions, rituals, commandments, or a set of exercises to revive one's dead chakras. To understand what we are compelled to... For Trika, world is not some illusion or maya, but the real expression of the Lord and His manifesting power, Shakti. World is taken as much divine as the abode of Lord. The senses are not looked down upon as something inferior, as in the case with some other traditions which go on preaching move beyond senses, as senses are deceptive. This deception of senses too is accepted as the divine play in Kashmir Shaiva Darshana, and senses are referred to as devas or gods. Kashmir Shaiva Darshana is definitely a tradition, being nurtured by the greats like Abhinav Gupta and the revered Swami Lakshmanju. But this is a dynamic and live tradition, and to know about it, just understanding of words is not enough. One needs an insight enough to hold all the paradoxes in the mind. The academics have faced a big question or difficulty in the study of Kashmir Shaiva Darshana because they have not been able to draw the academic lines of differentiating it or getting it fully compared to other systems, because this system, which according to great Abhinav Gupta resembles the honey collected by honeybee from different flowers, but still remains not only unique in itself but dynamically progressive. This is the tradition of unsettling the popular traditions of spiritual realms across the board, has even its own interpretation of the song of the divine. For Kashmir Shaivism, world is not some illusion or maya, but the real expression of Lord Shiva and His manifesting power, Shakti, I repeat it. Acharya Abhinav Gupta rightly says that these things are worthwhile for those only who are likely to go into the state of Parabhairava, the state of spiritual ecstasy. The delicious things of Trika are not meant for those who are lost in the world and its affairs. To put it in the modern sense, these sutras are meant for mature minds and ripe intellect, who have comprehensive understanding of themselves, because for immature these delicious things just mean indulgence of senses which leads to gross state of being, while as the whole purpose of every sutra here is journey towards subtle, the divine spanda, to experience the impulses of creative intelligence. I would like to extend a very warm welcome to all the distinguished guests, to all the heads of the departments, deans, my faculty of the center, resource persons, speakers from Kashmir University, CUK, IUST, Jamia Millia Islamia, Mano Hyderabad, in this seminar on contribution of philosophical thought from Kashmir, which is organized by our center in collaboration with ICPR. I'm sure that they will contribute greatly to the event with their knowledge, experience, and expertise. Ladies and gentlemen, conducting of conferences at national and international level is a regular feature of our center. Since 2014, Dr. Nasru is coordinating the seminars which are sponsored by ICPR. Well, as far as today's theme is concerned, we see that since 18th century, or the period when Britishers colonized the Indian subcontinent, the Eastern knowledge base was referred inferior and less transformative to that of the West. As Thomas Babington Macaulay in his report, which was published in something in 1834 to 30, he justified it by referring the whole knowledge base of East equivalent to the one shelf of the West. No doubt, all this was perpetuated to prepare Indian people psychologically to white man's civilized mission, and in this regard,
Britishers took full benefit of what their own philosopher Francis Bacon had suggested, that knowledge is power. Edward Said has wonderfully highlighted this colonial program in his magnum opus, Orientalism. Although now, decades we are physically decolonized, but still we are under mental colonialism. As we always aspire to Western lifestyle, sometimes education, food, we are fascinated to see the Western influence. Everything we are influenced some way or another way. However, the restless efforts of post-colonial theorists like Francis Fanon, Homi K. Bhabha, Gayatri Spivak, etc. have made us to realize that this mental subjugation and the epitome of their post-colonial theory is actually a plea called the decolonization of mind. While looking at the Indian knowledge base in general and that of Kashmir in particular, we come to know from the historical sources that Kashmir in ancient times has been a great center of learning and intellectual engagements, and that's why it was referred by Shankaracharya as Sarvagaya Pita, or center of every branch of knowledge. In the field of philosophy, Kashmir in early medieval times gave birth to unique philosophy referred with various names like Kashmir Shiva Darshan, Trika Darshan, etc. Interestingly, it is the same philosophy which attracted Western scholars of repute like Alex Sanderson, Raphael Turella, Mark Davatsky, and Britannia Bumer to travel from West to study this philosophy in Kashmir at the feet of 20th century Shivaite scholar Swami Lakshmanjo. Lal Ded is one of the famous saint poetess of Kashmir, also belonging to the same philosophical thought, which becomes clear by her works like Yotbugayas Tatios Sui, Tuthi Jutum Mol Sui, Kanas Sunum Wol Sui, Sui Hai Sui, the Beku Sui. This philosophical thought also gave birth to an indigenous Sufi tradition in Kashmir called Rishism. The founder of this order, Sheikh Nuruddin Rishi, traced this spiritual genealogy to Shaivite Lal Ded, which becomes clear by one of his shruk. Tami Padman Porchilale, Yemi Gale Gale Amratcho, Suisan Avatar Lale, Suison Avatar Lale, Tuthui Varme Dito Devo. Such philosophical thoughts and personas were responsible for giving birth to a culture of living in togetherness, which is real identity of Kashmir. Thus, this seminar endeavors to revisit and reconfigure our philosophical heritage of Kashmir with decolonized mind and to locate our real identity shaped by these forces. Thank you so much, and again welcome you all, the dignitaries and all who are present in this hall, and I wish you all the very productive session ahead. Thank you so much. The history of philosophy is as old as the history of mankind itself. And the definition of philosophy is as complicated as the subject of philosophy itself. This is I believe in it. Usually you study subjects and you have a subject matter of the subject in mind, and then you concentrate. But the philosophy is a subject that concentrates on multidimensional aspects of knowledge and learning. Therefore, its definition is very difficult to make an explanation of. In spite of the grand civilizations that had been referred to by Professor Bashir Bashir, the Mesopotamian civilization, the Egyptian civilization, the Chinese civilization, the Iranian civilization, the Greek civilization, and of course the Indian civilization, this way or that way had identified multidimensional aspects of philosophy and philosophical studies in different periods of time. As against other subjects, the subject matter of philosophy encompasses all historical knowledge and the knowledge of human history, which include philosophy of what we usually call metaphysics,
philosophy of aesthetics, philosophy of ethics, philosophy of spirituality, and lastly, the philosophy of religious philosophies as well. This, in fact, what actually philosophy, my understanding. Dr. Harun is here. He is the most significant scholar on these studies. So it is I'm too small in front of although a student. But in spite of all that, having multiple definitions of the philosophies, but these things, when it comes to your mind, the aesthetics, the ethics, the spirituality, and the religious philosophies, and the metaphysics, as a philosophy, it all comes within the domain of the subject and the study of philosophical studies. Since Kashmir throughout the histories has been the cradle of knowledge and learning, as such the distinguished scholars had extraordinarily contributed after having identified the significance of philosophy to the growth and the development and the vision and the value system and the ethical aspect of the subject of philosophy in Kashmir itself. 9th and 10th centuries, the centuries of Abhinavgupta and Kalhana, and the 14th and 15th centuries, the centuries of prominent scholars of Kashmir, had extraordinarily contributed to the multidimensional aspects of knowledge and learning. These centuries constitute one of the prominent and formative phases in the history of Kashmir culture and civilization, as it accounted for momentous religio-cultural diversities, expansion of different faiths, to begin with the Buddhism, then the Shivism, then the Hinduism, and lastly the consolidation of Islam in Kashmir itself. It has enriched our literary legacy. It has enriched our, what we usually call, the philosophical studies as well. More, compatible, almost quite compatible to the literary legacy that had been left behind by the grand scholars in medieval Islamic heritage. This is what exactly I believe. You can never study Kashmir philosophy in isolation unless and until you connect it with the grand legacy that had been left behind by the great and the distinct scholars. Our illustrious sons and the scholars and the philosophers and the visionaries and the men with knowledge and understanding like Kalhana, like Balhan, Abhinavgupta, Vasugupta, Khemraj, Anand Burman, Sir Tej Bahad Sapru. These are some of the scholars, distinguished scholars who have produced material on multiple aspects of philosophy, and other related subjects at a time when there was not much flair for such type of studies. That led, in fact, the development of Trika philosophy that had been referred to by Dr. Satish Vimal. That, in fact, this led. Complex of religions, intermixing of ideas and, philosophies, that led to the amalgamation and the complex of religions, led to the development of Trika philosophy, while from you have got these narratives, the ethical values, the ethical philosophies, where from the Buddhism, from Shivism, from Hinduism, coming all these, maybe it's called, because of that, it's called as Trika philosophy. As a student of Islam studies, I don't know much about philosophy, but something that had come to my mind. Abhinavgupta, in fact, was the founder of the Shivaite philosophy, although it was not, maybe before him. The way he had represented philosophical, the ethical values of philosophy, three things that had come to Abhinavgupta. That's one, what he actually believed in. And that's quite compatible to the scholars of, Arab world at that time. Number first, what he believed in, that the supremacy of God, what he actually calls a Shiva. That's number one. Number second, the self-realization. This is what Abhinavgupta has told. Philosophical studies. Number third, exploration of universe and negation to any discrimination that could be continued on the basis of caste, creed, color, sex, birth, and nationality. These ideals and these, perspectives are quite relevant and equate with a philosophy that had long back been originated, developed, propagated, expanded in different parts of the medieval world, especially in Baghdad, by the grand scholars of that time. Shivaite philosophy with special reference to Abhinavgupta. His vision, his worldview, his value system, his ethical basis are quite compatible to all the Muslim scholars, especially Muslim philosophers. But this is what I exactly believe in. And all those Muslim scholars, start from Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Istakhri, Masudi, Ibn Rushd. These are the people and their philosophies. Next comes to the philosophical thought of Imam Ghazali, whose renowned works in philosophy has been
been Tuhfatul Falasifa, Kimya Isadat, Ihya Ulumuddin. These are books on the one part. Who exactly believed the same three components of philosophical thought? And the way, Allama Iqbal in front of Professor Mushtaq Sahab, he explained the concept of khudi in three perspectives. Number first, the realization of God. Number second, what you call the, realization of self, that what God speaks about, and the exploration of the universe as well. This has been quite, relevant to our studies all these times. And there you have found three perspectives. Same perspectives have been developed in Kashmir by Shivaite philosophers at different stages of time. How and why all these things had happened? It is in flex of to my understanding, the impact and the inspirations that had developed these perspectives, that had developed these sciences. And second is Allama Iqbal, when he talks about concept of khudi in different his reconstruction of religious thought in Islam, then Zarb Kalim, Bali Jibril, and Armugani Hijaz. These are some of the compositions of Allama Iqbal, wherein he has straightway referred to the same perspectives as it. Why it had happened? Allama Iqbal, while referring to self-realization, as Quran has said, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. This is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allama Iqbal says, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तू बन. आज मैं इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत कल्हड़ के कंटेम्प्रेरी बिल्हड़, जब कल्हड़ ने यहाँ पे प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी तो यहाँ से साउथ इंडिया चले गए. वहाँ जाके उन्होंने अपने 2 ग्रंथ लिखे, विक्रमांक देव चरित और चोर पंचासिका. तो विक्रमांक देव चरित के आखिरी श्लोक में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है. मैं उस श्लोक से इसका श्री गणेश करना चाहता हूँ. सहोदरा कुकुम के शरणनाम भवन्ति नूनम कविता विलासा न शारदा देशम पास दृष्ट देशम यदंतु मया पिरोहा. इसका मीनिंग, कुकुम यानी फूल, केसर और काव्य विलास आपस में सगे भाई हैं. शारदा, कश्मीर देश को छोड़कर दूसरी जगह मैंने इनको साथ साथ कभी नहीं देखा. इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफिकल थॉट फ्रॉम कश्मीर और ICPR से फंडेड यह हमारी 11वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, 11वां सेमिनार है. कश्मीर भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में अपनी सुंदरता में एक विशेष स्थान रखता है. कश्मीर में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों ही पक्षों ने इसके सौंदर्य में एक विशाल ही आकर्षण का समावेश कर दिया है. यहाँ की बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, नदी, नील, झरने, झील और उपत्यकाएं इस धरा के कोमल मनोरम सुंदर चित्र को प्रकाशित करती हैं. दूसरी ओर वेगवती नदियों की धाराएं, अति गहरी खाइयां, पिघलते हिमखंड कश्मीर के सामान्य जनों को रात्रि के सघन अंधकार में भयभीत करते हैं. पर्वतों के भयानक दृश्य भी कश्मीर के कठोर पक्ष का सुंदर वर्णन करते हैं. कश्मीर भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य की अनेक विधाओं की जननी यानी माँ भी है. कश्यप धरा कश्मीर अति प्राचीन काल से समाज के बौद्धिक विकास, आर्ष का सृजन, प्रवचनों का मुख्य केंद्र रहा है. वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है. इस काल में ऋग्वेदीय संहिता की वाचसनी संहिता यानी वाचसनी चैप्टर की रचना कश्मीर में ही हुई थी. ऋग्वेद संहिता की वाचसनी संहिता की यह रचना कश्मीर के पांडित, शिक्षित, सभ्य समाज और राष्ट्र के इतिहास को आज से लगभग 1008 वर्षों तक लेकर जाती है. रामायण, महाभारत, पाली और पाली जातकों में भी यत्र तत्र कश्मीर की सृजन कला का वर्णन प्राप्त होता है. कश्मीर में 2वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य 3 उपपुराणों, विष्णु धर्मोत्तर उपपुराण, वासुकी उपपुराण और नीलमत उपपुराण की रचना भी हुई थी. इन तीनों उपपुराणों में कश्मीर के प्राचीन भूखंड के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आस्था, विश्वासों, मान्यताओं और उपास्य देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है. अपने अतीत काल में कश्मीर की सभ्यता 3 विश्व प्रसिद्ध सभ्यताओं, चीनी सभ्यता, मध्य सभ्यता और फारस सभ्यता से तीनों ओर से घिरी थी. इन 3 प्रमुख सभ्यताओं से घिरी कश्मीर
की बुर्जहोमा की सभ्यता स्वयं कश्मीर में ही अपने अस्तित्व की अस्मिता के प्रमाण प्रस्तुत करती है। इन सभी सभ्यताओं ने आपस में एक विशेष सामंजस्य स्थापित कर लिया था। कोई भी सभ्यता कभी भी किसी भी सभ्यता की ऋणी नहीं होती है, अपितु उसका उपादान कारण भी होती है। ठीक इसी प्रकार कश्मीर की सभ्यता केवल ग्रहणशील सभ्यता ही नहीं बनी रही, केवल उसने लिया ही नहीं, अपितु इन सभ्यताओं में कश्मीर का भी विशेष योगदान रहा है। कश्मीर ने इन सभ्यताओं और संस्कृति को धर्म, इतिहास लेखन जैसे राजतरंगड़ी, संगीत शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसी अनेक विद्याओं की कश्मीर माँ भी है, जननी भी है। ऐतिहासिक काव्य सृजन परंपरा का श्री गणेश भी कश्मीर में ही हुआ था। राजतरंगड़ी की रचना कश्मीरी पंडित कल्हण ने सन 1149 ईस्वी में की थी। राजतरंगड़ी ईश्वर प्रतिविज्ञा विमर्शनी और सर्व दर्शन संग्रह आदि साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में इस तथ्य के साक्ष्य भी स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं कि कश्मीर में 6 आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शनों में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और विज्ञानवाद तथा चारवाक दर्शन रूह को नहीं मानता है और ये फिर पुनर्जन्म को भी नहीं मानता है। इसका कहना है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत भस्मी भूतस्य देहस पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, पैसा उधार लेके घी पियो, अगर एक बार मर गए तो दोबारा ये शरीर जन्म कैसे ले सकता है? वो आत्मा को नहीं मानता है। चारबाग दर्शन और कश्मीर दर्शन का एक ज्वलंत प्रकाश पुंज रहा है। कश्मीर में द्वैत दर्शन के अतिरिक्त अद्वैत दर्शन भी समानांतर रूप में पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ है। कश्मीर का शैव दर्शन, जिसे त्रिक दर्शन और प्रतिविज्ञा दर्शन भी कहा जाता है, इस शैव दर्शन की परंपरा का जन्म कश्मीर में हुआ था। इस कारण इस दर्शन को संसार भर में कश्मीर शैव दर्शन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इस कश्मीर शैव दर्शन के छतनार वृक्ष रूप दर्शन का बीज आरोपण आचार्य वसुगुप्त ने अपने शैव सूत्रों से 6वीं शताब्दी में किया था। वसुगुप्त के 2 मेधावी शिष्यों भट्टकल्लट ने शिव सूत्रों पर स्पंद वृत्ति और शोभानंद ने स्पंदकारिका की रचना कर इस दर्शन का प्रचार प्रसार संपूर्ण कश्मीर में किया था। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिविज्ञा विमर्शनी, क्षेमेंद्र ने प्रतिविज्ञा हृदयम और क्षेमराज ने योग प्रदीप का ग्रंथ की रचना करके इस प्रमुख दर्शन को विशेष योगदान दिया। भरत मुनि के रस सूत्र, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग और संयोगात रस निष्पत्ति के 4 प्रमुख व्याख्याकार भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त भी कश्मीरी विद्वान ही थे। 10वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक काव्य शास्त्र और काव्य सौंदर्य शास्त्र की परंपरा की जन्मभूमि भी कश्मीर ही रही है। आचार्य भामा, महिम भट्ट, मम्मट, दंडी, कुंतक, रुद्रट और आनंदवर्धन इस तरीके के प्रमुख विद्वान रहे हैं। इन सभी आचार्यों और विद्वानों की भाषा संस्कृत और लिपि शारदा थी। 14वीं सदी में सूफी मत के रथ पर सवार होकर शरीयत रूपी घोड़ों और सुन्नत रूपी सारथी को लगाकर रथ रूप में इस्लाम धर्म ने और सूफीजन ने कश्मीर में प्रवेश किया। ये इस तरह से क्लियर किया जा सकता है कि किसी भी जंग के मैदान में जहां हाथी और घोड़े होते हैं, कि रथ होता है, तो रथ में एक रथ को चलाने वाला सारथी होता है, एक घोड़े होते हैं, एक रथ होता है और एक उसको बैठने वाला रथी कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो रथ था वो सूफी मत का था, सूफीज़म था। शरीयत के उसमें घोड़े लगे थे और सुन्नत के उसमें सारथी था, घोड़ों को चलाने वाला सारथी सुन्नत थी। और जो मैन था, जैसे कि महाभारत में हम देखते हैं कि अर्जुन योद्धा थे, वो ही सब कुछ कर रहे थे, तो एक योद्धा के रूप में, रथी के रूप में इस्लाम दर्शन बैठा हुआ था। शरीयत रूपी प्रवेश किया भारतवर्ष में। सूफियों का भारत में आगमन फारस तथा तुर्किस्तान से पंजाब और कश्मीर के मार्ग द्वारा हुआ। फारस और तुर्किस्तान से कश्मीर की भूमि में पग रखने वाले सूफी संप्रदायों में कादरिया, सुहरवर्दी, चिश्तिया, नक्शबंदी और कुबरिया संप्रदाय प्रमुख थे। इस सूफी संप्रदायों ने जिस रूप और रंग में कश्मीर में प्रवेश किया था, वह सूफी दर्शन उसी अमिश्रित अर्थात पूर्ण इस्लामिक
रूप में नहीं रह सका। कश्मीर में कण कण से व्याप्त शैव दर्शन ने इस्लाम से प्रसूत सूफी दर्शन पर अपना पूर्ण प्रभाव डाला। कश्मीर की भूमि में इस्लामिक तसव्वुफ का शैव मत और योग दर्शन से सम्मिश्रण हुआ। इस प्रकार कश्मीर के सूफियों ने फारस की खाड़ी से आने वाले सूफी संप्रदायों के अंतर्गत एक नवीन सूफी संप्रदाय को जन्म दिया, जिसको कश्मीर में ऋषि सूफी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में संत लल्लेश्वरी लल्लदीद और शेख नूरुद्दीन नुरदियोस को माना जाता है। लल्लदीद के बाग आरंभ में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे चलते रहे और पश्चात में राजनायक भास्कराचार्य ने लल वाक्यानी नाम से एक पुस्तक में संग्रह किया था। शेख नूरुद्दीन की मुक्तक कविताओं को मोहम्मद अमीन कामिल ने नूरनामा शेख नूरुद्दीन वली के नाम से एक पुस्तक के रूप में संकलित कर प्रकाशित किया। कश्मीर में इस ऋषि संप्रदाय की आध्यात्मिकता के बीज ने एक छतनार वृक्ष के समान फैलकर आपसी सामंजस्य, सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का प्रकाश संपूर्ण कश्मीर में फैलाया था। इस कारण जन सामान्य के मध्य प्रेम तत्व, भाईचारा, सौहार्द का वातावरण कश्मीर में पैदा हुआ।